will start with the new chapter, the chapter number 3, that is the coordinate geometry. To coordinate and the geometry we should consider as geometry. That will come later on. But basically why the name is this? Because we want to locate some object somewhere. The first chapter we discussed that how to represent the rational and the rational numbers on a number line as well as the irrational. The same way to represent a thing somewhere is understood by the terms coordinate geometry. To understand the coordinate geometry, the basic things what we require, that is, you can see that I'll draw a graph here. The graph is called Cartesian plane. It's called Cartesian plane. Cartesian plane is, this both are considered as a number line. We know it is the horizontal and it is the vertical. This both are the number line. So as we discussed that how to represent the point on a number line, the same way when we have to locate the certain point, so that we use the Cartesian plane which we used to call in our day to day, that is life, is called graph. तो हमें ग्राफ समझना है and we learn today that how to represent the points on the graph. Let's start with the basic things. So you can see that the graph has, we draw the two lines. One line which I named x dash, which we used to call x axis, जिसको हम x axis भी बोलते हैं, which is called the horizontal. Second line, you can see that it is y dash, which we used to call y axis, and it is a vertical line. You can see that this both the lines are always intersecting the perpendicular to each other, which is right angle. दो लाइन हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, and the intersecting point is 0 and it is called origin. उसको हम बोलेंगे origin. ये origin पे x का भी एक पॉइंट है और y का भी एक पॉइंट है. This point is called 0 0. This 0 0 ये x का पॉइंट है और ये y का पॉइंट है. ये पॉइंट को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट. The first is x coordinate. You should remember this. And the second is y coordinate. पहला हमेशा x का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा हमेशा y का कोऑर्डिनेट होता है. They can also be referred by some other name that also we'll discuss. But let's recall this. The two x's are there, x and y. X is the horizontal and y is the vertical. They both are perpendicular to each other, and wherever they intersect, it is called origin, and the coordinates of origin is 0 0. Now you can see that if we consider this as a plane, the graph paper, so ये line ने graph paper को 4 parts में divide किया. You can see 1 part, 2 part, 3 part, 4 part. Now each part is called quadrant. You should remember this word. It's called quadrant. हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? Quadrant. Now the name of quadrant, there are 4 quadrants. This is first, second, third or fourth. You should remember it should be in the same order. ये सबसे पहला quadrant है. This is the second quadrant. It should be in the same order. हमेशा याद रखें. This is the third quadrant and this is the fourth quadrant. It should be in the anti-clockwise. We start with here, then it should be the anti-clockwise. Now the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. So you can see that on the axis the coordinates are there. ये 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 2, we know it's always positive 5, and here it is also 1 2 3 4 and 5. So here you can see that the first quadrant, in the first quadrant both the x and y axis are positive.
अगर हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड आएंगे ऑन द एक्सेस, हमें पता है कि इट शुड बी ऑलवेज अ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज रहते हैं. सो दिस इज द नेगेटिव. सो व्हाट वैल्यूज कम इन द सेकेंड क्वाड्रेंट? पहले एक्स एक्सिस इसलिए माइनस प्लस. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज एक्स और वाई के प्लस होंगे. सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस होगा, वाई प्लस होगा. If I'll come to the third quadrant, we know this value must be negative on y-axis. Y-axis में नीचे हमेशा negative होता है. So on the third quadrant, you can see that x is negative as well as y is negative. तो ये negative है. Where in the last quadrant, fourth, x positive है और y negative है. So we should also remember this, that if both the coordinates are positive, तो वो हमेशा first quadrant में होगा. अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा. अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा तो दैट कम्स इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट. सो नाउ लेट्स लर्न दैट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ पेपर. बिफोर वी अंडरस्टैंड टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ, लेट अस अंडरस्टैंड. Suppose one coordinate is there. Suppose it is 2 and 3. We used to call 2, 3. As we discussed earlier, it is of x coordinate and this is always of y coordinate. So now the students, please remember, everyone, this is what I am going to discuss. It could be a 1-mark questions for you. That the first is always a x coordinate and second is always a y coordinate. So the first x coordinate is always read as abscissa. I'm repeating, it's called abscissa. The x coordinate is called abscissa. So if the question comes that what is the abscissa of this coordinates, तो हम बताएंगे आंसर 2. एब्सिसा मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, और y को बोलेंगे ऑर्डिनेट. दोबारा एक बार, इट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. सो द ऑर्डिनेट इज 3. इफ आई आस्क यू वन एग्जांपल -1 and 2, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ऑर्डिनेट, तो हमारा आंसर होगा 2. एंड व्हाट इज एब्सिसा? सो -1. So you should remember this. The x coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate. So now let us understand. Again, before we go for the representation. So here we have taken one example to write down the coordinates of the given point. We have written A, B, C, D, E, F, G, H and I. This many points are there which I have written on the graph paper. We should consider it is a graph paper. So now let's note down the coordinates of all these points. X और y axis लिखेंगे and we'll also write down they lies in which quadrant. ठीक है? So let's understand this. बहुत important है, बहुत जरूरी है, बहुत easy भी. For point A, you can see the point A is here. ये कोई quadrant में नहीं है. It is on the एक्सेस. तो कोई भी पॉइंट हम कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट. पहले ई समझ लेते हैं, फिर ए पे आता है. लेट्स अंडरस्टैंड ई फर्स्ट. टू अंडरस्टैंड दैट विच आर द कोऑर्डिनेट्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रॉम दैट पॉइंट वी शुड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस. वो पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा. That perpendicular point is -4. वो होगा हमारा x कोऑर्डिनेट. सबसे पहले पॉइंट से हमने x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनाया, वही पॉइंट से हमने y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बनाया और वो पॉइंट है 3. So we can see here the coordinates of point E is -4, 3. तो आप देख सकते हो as it is the first quadrant, as it is the second quadrant. So this point E lies in the second quadrant. वो second quadrant में. As we discussed the first quadrant, both the coordinates are plus plus.
हियर x इज माइनस, y इज प्लस, जैसा हमने देखा x माइनस y प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस होगा और y माइनस होगा। ठीक है, दोबारा एक बार एक और पॉइंट ले लेते हैं। लेट्स टेक पॉइंट f। यहाँ पे हियर आई एम एक्सप्लेनिंग दैट हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज गिवन ऑन द ग्राफ। तो पहले वो पॉइंट से हम देखेंगे कि वो x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो वी शुड कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू x। तो वो पॉइंट 4 है, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन y एक्सिस जो 6 है। So we can say that point F is the coordinates are 4 and 6. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। The x axis is 4 and y axis is 6. Is it fine? Clear? समझ में आया? So the same way let's write down all the coordinates. मगर यहाँ पे पॉइंट A देखो, it lies on the axis. तो पहले यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं x एक्सिस पे तो वो पॉइंट 0 आ रहा है और y एक्सिस पे ही है, सो इट इज 0 7 एंड दिस पॉइंट कुड नॉट बी ऑन एनी क्वाड्रेंट। तो वो कहाँ पे है? वी कैन से इट इज ऑन y एक्सिस। ये कहाँ पे है? y एक्सिस पे। तो कैसे पता चला? जिसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 हुआ वो हमेशा y एक्सिस पे होगा और जिसका y 0 होगा वो x पे होगा। लेट्स कम टू दिस पॉइंट। दिस इज पॉइंट B, यू कैन सी हियर। तो पॉइंट B x एक्सिस है -2 और y एक्सिस 0। लुक एट द पॉइंट C समवेयर हियर। तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, सॉरी 6 है और y कोऑर्डिनेट है 0। So we can see this both lies on the axis. ये x axis पे है, this point is also on x axis. So if the point which lies on the axis उसका कोई coordinate 0 होना चाहिए, उसका कोई या x या y। अगर x 0 होगा तो y axis पे, y 0 होगा तो वो x axis पे होगा। Is it clear? Let's see where the point D is. Point D is here. तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट है -3। सो दिस लाइज ऑन y एक्सिस। ठीक है, इज इट फाइन? लेट्स गो फॉर g एज वी डिस्कस। सो पॉइंट g इज हियर। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे 3 एंड द y कोऑर्डिनेट इज -5। सो एज इट इज प्लस माइनस वी कैन सी इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। Then h is here. So on x axis it is -7. मैंने wrong दिया, x यहाँ पे, I'm sorry. So it is 3 and y axis is -7. So it is in the fourth quadrant. Let's come to the I. So on x axis it is -7 and on y axis it is -3. As both are negative, so it is in third quadrant. So what we discuss here? We discussed that how to give or how to find out the coordinates when the point is given on the graph. Let us continue with this question. In this question I have written the 5 coordinates here, which are the points. So we have to tell that they are in which quadrant, and after that which quadrant or line, and after that we have to represent them on the graph paper. So again let us recall. If it is plus plus, so it is first quadrant. If it is minus plus, second, minus minus third, and plus minus fourth quadrant. So it based on the coordinate. It's minus plus, it must be in the second quadrant. ये second quadrant में होगा. It is plus minus, so it must be in the fourth quadrant. Plus minus. Look at here. तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये पॉइंट इधर आना चाहिए, ये पॉइंट इधर आना चाहिए। इट्स -1 0, ये क्वाड्रेंट में नहीं होगा क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, सो इट लाइज ऑन x एक्सिस। वी कैन आल्सो सी दैट इट लाइज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ एक्सिस, x एक्सिस। प्लस प्लस दोनों प्लस है तो इट मस्ट बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
Both are minus, so it must be the third quadrant. So now, as we discussed, the point lies on which quadrant? Now let us represent this point on the graph paper. Now let's understand how to represent this. The first coordinate is minus 2, 4. So the first we have to check for minus 2 on x-axis and 4 on y-axis. So you can see that the point lies here somewhere. It's minus 2, 4. Remember this first represent on x-axis and second should be on y-axis. आप 4 minus 2 नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे minus 2 नहीं, वो गलत होगा. तो we obtain this point as in the second quadrant. Let's go for this. 3 minus 1. तो 3 positive इधर है और minus 1 negative इधर है. So it's supposed to be like this. 3. The minus 1 should be like this. So this 3 minus 1 point supposed to be in the fourth quadrant as we opted. Let's go for this. Minus 1, 0. So it must lie on x-axis because y coordinate 0. So x-axis पे minus 1 कहाँ पे? Here. So this is the point which is called minus 1, 0. Let's come to the next. It's 1, 2. X is 1 and y is 2. Both are positive. So x1 इधर and y2 it is here. So it lies here. So this is 1, 2. The next is minus 3 minus 5. X is minus 3, y is minus 5. So x minus 3 is here and y minus 5 is here. So you can see they both are intersecting here and this we obtain in the third quadrant. So as we have written that the point lies in a certain quadrant of the axis, thus we obtain the points on the same quadrant and the axis. So thus it is how we can represent the coordinates on any axis or in the quadrant.